Hello everyone, my name is Vikas Bhardwaj and I'm a guest faculty in the Department of Commerce, Bharati College, NCWIF Center, University of Delhi. So welcome to this short overview of the financial management subject. In this video, I'll take you through the introduction of the subject, its core objectives, a brief breakdown of the syllabus and the recommended readings so that you can get started with clarity and confidence. Now let's start with the basic introduction of the subject. So it is a DSC subject, that is discipline specific core subject. Hence it consists of 4 credits जिसमें से 3 क्रेडिट्स लेक्चर्स के हैं एंड 1 क्रेडिट इज़ फॉर प्रैक्टिकल. सो ऐसे में अगर इसके मार्क्स की या टोटल मार्किंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 160 मार्क्स, जिसमें से 90 मार्क्स आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के हैं दैट विल बी हेल्ड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर. देन 30 मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए एंड रेस्ट ऑफ द 40 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के लिए. अब प्रैक्टिकल के 40 मार्क्स के लिए भी अलग से 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये 40 मार्क्स डिवाइडेड हैं, जिसमें से 40 में से 20 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, देन 10 मार्क्स हैं वाइवा के लिए एंड रेस्ट ऑफ द 10 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट फाइल के लिए. आई होप ये इस सब्जेक्ट की मार्किंग स्ट्रक्चर को लेके थोड़ी सी क्लैरिटी देगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ कंपनीज डिसाइड टू इन्वेस्ट इन न्यू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स or where they get money for their businesses, or you may have seen some companies paid big dividends but others don't. So financial management इन questions का आंसर करने में आपकी हेल्प करता है. Through financial management you get to know how money moves in a company and how smart decisions are made to grow and sustain a profitable business. और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी इसी से रिलेट करते हैं जिसे अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. First objective is to understand the basic principle of finance, such as time value of money and risk return trade-off. Then second objective is figuring out if a business project is likely to generate a profit or not. Then the third objective is to know about how businesses get their fund, whether they get it from loans, by issuing of shares or debt securities, or from any other sources. Then the fourth objective is to see how companies decide how much to pay out as a dividend from the profit and how much to keep the profit for the growth purposes. Then the last objective is to learn how to run a business smoothly by keeping working capital management intact. It includes buying and selling of goods, then keeping cash on hand, and lastly paying out the suppliers and managing other current assets and current liabilities. Now let's break down the syllabus unit by unit so that you know what to expect from the syllabus. So first unit is financial management overview. So this unit includes the basic meaning of financial management, what are its goals, and why do risk and return matters. Then there is another topic named profit maximization versus wealth maximization, and except these we get to know about some important finance topics such as time value of money. Now second unit is capital budgeting techniques. So इस unit के अंदर we get to know कि companies अपनी big expenses को like buying of factories और buying of machine इन सब को कैसे plan करती हैं. Then बिजनेस प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेके कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं. सो देयर आर 2 कैटेगरीज, ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एंड डिस्काउंटेड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. जिसके अंदर ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की बात करें तो इसके अंदर हमारा पे बैक पीरियड आता है. देन देयर इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. देन जो डिस्काउंटेड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं इसके अंदर हमारे पास आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज़ एनपीवी, देन आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. So with the help of this capital budgeting techniques we get to know whether it is worth it to invest in these projects or not. So ये unit बहुत ही important है. Then third unit is cost of capital and financing decision. So in this unit we'll try to explore how companies
measure the cost of capital for different sources of capital. Then we also discuss about the capital structure, that is how much money is coming from the owner versus how much money is borrowed for the capital. देन लास्टली इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें पहला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑल्सो नोन एज बैक. Then capital structure theories in context of their relevance and irrelevance to the capital structure or value of the firm. Then last topic जो होगा इस यूनिट का, that will be leveraging decision, which includes our operating leverage, financing leverage and combination of both, which is also known as combined leverage. तो नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ फोर्थ यूनिट, इज़ अबाउट डिविडेंड डिसीजन. सो इसमें हम डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंपनीज कैसे आंसर करती हैं या कैसे डिसाइड करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. विच इंक्लूड्स कि कंपनीज कैसे डिसाइड करती हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है. देन अगर देना है, then what will be the proportion of profit that needs to be or required to be given out as dividend. देन इसे लेके कुछ थ्योरीज भी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, विच अगेन इंक्लूड्स मॉडिग्लानी एंड मिलर थ्योरी. देन वॉल्टर्स थ्योरी इज देयर एंड लास्ट इज गॉर्डन्स थ्योरी इज देयर. देन लास्ट यूनिट इज यूनिट 5, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. इसमें we will learn about managing cash and then how to deal with customers and suppliers, and we also learn how to make sure that business doesn't run out of money for day-to-day needs. So this ends up or sums up our syllabus for all 5 units. And now finally I would like to suggest some readings and books so that you can understand financial management in detail. So my first recommendation would be Essentials of Financial Management by I.M. Pandey. Then the second recommendation is Fundamentals of Financial Management by R.P. Rastagi. And the third reading that I would like to suggest is Financial Management Text, Problem and Cases by Khan and Jan. So all these 3 books are good, with clear language and exercises and examples and practical problems that will help you to understand financial management in a better way. So this concludes our video for this subject, and I'm looking forward to teach you guys in the class, and good luck for this semester.